Hello everyone. I hope you all are good and you all are practicing problems, learning concepts. In this session, we are going to practice questions from Prism and Optical Devices portion of Ray Optics. And as usual, first few minutes, we will first navigate through concepts, basic formulas, and then we will jump to question solving. Okay? So let's start with this one. ऑप्टिकल डिवाइसेस में हमें क्या क्या कवर करना है यहाँ पे वी विल बी कवरिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप and then also the improvement that is required in normal telescope. So Cassegrain telescope के बारे में थोड़ा देखेंगे and then we will talk about, first we will talk about prism. So basic structure you already know. This is transparent material again and three-dimensional body, uh, and two of its parallel faces will, at least two of its parallel faces will make uh, acute angle with each other. ठीक है, so that is about a structure. But first we will get to learn about कि prism में हमें याद क्या क्या रखना है in order to solve all the questions. So देखो ज्योमेट्री में अगर आप जाओ तो this one is called the angle of prism, right? इसको हम क्या बुलाते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म बुलाते हैं. नाउ लेट्स से दिस इज द लाइट falling onto one face of the prism. So this one is the light I have taken. And यहाँ पे आप normal बनाओगे, so OM is the normal on this face. Let's say this is AB. So on this AB face, so this is angle of incidence and this is first angle of refraction. Now this light will be incident onto the second surface of the prism and here incident angle is R2 and when it will come out, this is angle of emergence. Done है? So prism जब enter कर रहा है, whatever angle it is making with normal to the surface is incident angle, and when light is coming out of the prism, then whatever angle the light is making with normal at that point to the surface will be called angle of emergence. Now there is a term called angle of deviation. So light कितने एंगल से deviate हुआ है. अगर आप imagine करो यहाँ पे prism नहीं होता तो incident light would have gone in the direction of this green dotted line, है ना? So incident light तुम्हारा इस direction में गया होता. But because of prism, it is going in this direction. So by what angle it has deviated? आप इसको थोड़ा सा bottom, backward extend करो. आप देख लो ये light इधर की तरफ जाना था without prism. It is going in this direction, so it has bent like this by this angle. So this angle is called delta, which is called angle of deviation. And angle of deviation जब आप निकालोगे, it will be I plus E minus A with the help of basic geometry and everything. Done है laws of refraction and all. So this is delta equal to I plus E minus A. Again geometry में हमें और भी कुछ देखना है. R1 plus R2 is equal to angle of prism. Okay, so these are the two things we need to keep in our mind. Now there is a graph that we read, and in graph what we basically plot angle of deviation against angle of incidence. So what we do here is we keep on changing angle of incidence, and for that angle of deviation will keep on changing, and then we plot it along y and x axis. So here is the plot, here is the graph. अब देखो यहाँ पे हमें ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है. इस ग्राफ में एक चीज आप याद रखना, दिस इज मोर स्लोपी. ठीक है, ये वाला पोर्शन ज्यादा स्लोपी होता है एंड दिस इज योर लेस स्लोपी. Okay, so this is one thing, and then we can clearly see here for two angle of incidence, you will be getting one single value of deviation. और ये तुम्हारा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो जैसे आपने सपोज कर लो I is equal to 30 लिया, ठीक है, and for I equal to 30 you are getting E is equal to 60, let's say you're getting this. So angle of deviation will be how much? I plus E minus A. A is what? A is something constant, right? So this is 90 minus A in this case. और क्या हो अगर मैं लाइट को इधर से इंसिडेंट करवाऊं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा तुम्हारा क्या? 60, एंड इन दैट केस ये लाइट इधर से ही ऐसे जाएगा, सो एंगल ऑफ इमर्जेंस विल बिकम 30. डन है. और उस केस में अगेन I प्लस E का सम क्या होगा? 90, एंड डेविएशन विल बी 90 माइनस A. सो वी कैन सी हियर दैट ग्राफ में भी हमें दिख रहा है आई मीन दो I के वैल्यूज के लिए वी आर गेटिंग डेविएशन सेम, एंड दिस इज दिस केस. ओके, नाउ इन द ग्राफ यू कैन सी देयर इज वन पॉइंट वेयर डेविएशन इज मिनिमम, और ये वो वाला पॉइंट होता है जब तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है. और अगर ये I और ये E इक्वल हो गया तो क्या होगा? देखो यहाँ पे जो भी ये R1 है और यहाँ पे जो भी ये R2 है, अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे उसके लिए फर्स्ट सरफेस पे जब आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओगे आप क्या लिखोगे? चलो एक काम करते हैं, इसको I को हटा दो
वैल्यूज हटा दो. सो इफ यू राइट हियर स्नेल्स लॉ, यू विल बी राइटिंग at this point. I'm going to write so sin I, sin I is equal to refractive index of prism into sin R1. This is what you are going to write here. And if you write it here, what you will be writing? You will be writing sin E into 1 is equal to mu sin R2. अब आप देखो sin E and sin I are same. I is equal to E, right? So you can clearly see here mu sin R1 will be equal to mu sin R2. So R1 is equal to R2. और जब तुम्हारा R1 और R2 इक्वल होगा तो ये जो लाइन है, रिफ्रैक्टेड लाइन जो दिख रहा है इनसाइड प्रिज्म, दैट विल बिकम पैरेलल टू द बेस, राइट? So basic geometry का thing है. So when your case of minimum deviation is what? It is the case when I is equal to E. And when I is equal to E, what are the changes we are going to observe? R1 will be equal to R2. So in this case, A, which is equal to R1 plus R2, let's say this is equal to R, so this will become equal to 2R. So R will be equal to A by 2. Done it? And also this is parallel to this one. So this is the case of minimum deviation. And in the case of minimum deviation, we write one very important formula, that is we write things for the calculation of refractive index of the prism. जैसे यहाँ पे अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे at point M, डन है. सो सबसे पहले तो आप देखो हम ये लिखते हैं I प्लस E माइनस A इज इक्वल टू डेल्टा. ठीक है. सो I प्लस E, I को क्या, E को क्या लिख सकते हो? I लिख सकते हो. सो दिस इज 2I is equal to delta plus A. So I can be written in terms of delta and A. So delta plus A by 2. Now apply Snell's law at point M. So you will be writing sin I, which is delta plus A by 2, delta plus A by 2, and this will be equal to refractive index of prism into sin R1, which is equal to how much? It is equal to A by 2. So आप कुछ ऐसा लिखोगे. डन है. Now mu का value will be equal to how much? It will be equal to sin delta plus A by 2 divided by how much? Divided by sin A by 2. So this is what you are going to write. And for thin prism, we can do certain approximation. Thin prism कहने का मतलब when angle of prism is less than equal to 10 degree. ठीक है. इस रेंज के लिए आप क्या कर सकते हो? आप आई मीन यू कैन अज्यूम दैट दिस एंगल डेल्टा प्लस ए बाई टू इज वेरी स्मॉल. सो ए बाई टू इज ऑल्सो वेरी स्मॉल. ओके. सो आई मीन ए इज स्मॉल. So a by 2 is definitely very very much smaller, and delta plus a by 2 is also small. So small angle approximation हमने पढ़ा है और हम काफी ज्यादा जानते हैं. और तुम लोग तो मैथ्स के स्टूडेंट हो, यू नो इट वेरी वेल. आई मीन इफ एंगल इज स्मॉल, साइन आई कैन बी रिटन एज साइन, sorry, I. Done it? And tan I can be written as I. So here this angle is small. In that case, sine of this angle can be written as simply this angle. So here if you write mu is equal to, आप क्या लिखोगे? A plus delta by 2 and divided by sine of A by 2, simply उसको भी A by 2 लिख लो. 2 will get cancelled. Mu A is equal to A plus delta. So delta is equal to how much? A mu minus 1. So this is the deviation formula only for thin prism. You cannot use it for any sort of prism. So prism में आप ये चीजें आपको बेसिक याद रखनी है. उसके बाद है dispersion. Dispersion क्या होता है? It is basically breaking of white light into its component colors. And the question is कि ये ऐसा होता क्यों है? So it happens because of this fact, Cauchy's formula जो ये कहता है कि wavelength of light depends on, sorry, this is n, I mean this is refractive index. So refractive index of any media depends on wavelength of light traveling through it. So कोई भी light किसी भी media के through travel कर रही है, उस light के लिए उस media का refractive index क्या feel होगा, that will depends on the wavelength of light. और मैंने ये चीज पहले भी डिस्कस करा है. सो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा का स्क्वायर. एंड लैम्डा अगर तुम्हारा ज्यादा है, सो ज्यादा किस केस में होगा? I mean, if you talk about the spectrum of white light, then for red light, wavelength will be greater. And if wavelength is greater for red light, refractive index will be smaller. उसी तरह से blue light के लिए, violet light के लिए lambda क्या होता है? छोटा होता है, mu ज्यादा होगा. और mu ज्यादा होने से देखो क्या हो रहा है? This is a prism sort of structure. अभी suppose कर लो ये thin prism है. So thin prism में अभी अभी हमने देखा angle of deviation क्या होता है? mu 1 minus, sorry, a mu minus 1. Right? It was this one. Then A mu minus 1. Yes. So this is the delta. And so delta you can see directly proportional to mu. And mu is directly proportional to 1 by lambda ka square.
डन है. सो डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. सो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका डेल्टा कम होगा, डिविएशन कम होगा, और जिसका लैम्डा कम है उसका डिविएशन ज्यादा होगा. सो यहाँ से देखो, अगर प्रिज्म नहीं होता तो व्हाइट लाइट वुड हैव गॉन इन दिस डायरेक्शन. नाउ टॉक अबाउट द रेड लाइट. रेड लाइट का डिविएशन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है. सो यहाँ से देखो, पहले रेड लाइट दिख रहा है, इसका डिविएशन इतना है, right? And if you see here the blue light, इसका deviation इतना है. So definitely blue light नीचे की तरफ जाएगा और red light will be closer to this incident light direction. डन है. इसलिए तो हम ऐसे लिखते हैं ना, विपचियोर ऐसे लिखते हैं. So spectrum gets formed like this. Okay, so this is the reason. Now if you have to if you have to get the component colors again back to the white light, तो हम क्या करते हैं, एक similar sort of prism रखते हैं, inverted to that of the first one. अगर ऐसा prism आप रखोगे तो क्या होगा, यहाँ से जो भी deviation हुआ, suppose कर लो red light को focus कर लो, incident light का direction ये था, red light का deviation किधर हुआ है? इधर की तरफ. ठीक है. And so this deviation is of certain value in which direction? In clockwise direction. And since second prism is inverted, it will do the same deviation, but in what direction? In anti-clockwise direction. So overall deviation add हो जाएगा zero की तरफ, and finally when it will pass through this structure you will be getting white light. और देखो इन दोनों को जब वो पास लेकर आओगे ना, ये स्लैब तुम्हें कैसा दिख रहा है? ये स्लैब. So this looks like a plain, this glass slab sort of structure. ऐसे भी हमने देखा है glass slab से जब light जाती है तो light disperse नहीं होता, क्योंकि it acts like combination of two prism, and their top points, that is this thing are basically inverted. Then they are not in the same orientation. That is why. ओके, सो दिस इज वन थिंग. उसके बाद तुम्हें छोटी छोटी चीजें जो है जो याद रखनी है. सबसे पहला चीज है एंगल ऑफ डिस्पर्सन, कितने एंगल में लाइट डिस्पर्स हुआ है. तो देखो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन कौन सा है तुम्हारा? इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन इज दिस वन. एंड in what angle the light has dispersed. So you can see here red light यहाँ disperse हुआ, and then blue light has dispersed by this much. So in the angle in which all the colors of light has dispersed is this much. एंड ये एंगल का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? सो ये वैल्यू सपोज कर लो, ये वाला एंगल आपको पता है, दिस एंगल, लेट्स से दिस इज थीटा 1, एंड दिस एंगल यू नो, लेट्स से दिस इज थीटा 2. सो थीटा 2 minus theta 1 will be what? This angle in which light has dispersed, right? So this is equal to theta 2 minus theta 1. So theta 2 is basically the deviation of violet light. So deviation of violet light का formula अगर आप लिखते हो, that is uh, delta violet. So this is nothing but delta violet, and this is nothing but delta red. Okay, so delta violet आप क्या लिखने वाले हो? A angle of prism into mu v minus 1 minus A, and this will become mu r minus 1. If you will, I mean, expand, solve this basic equation, you will be getting what? A mu v minus A mu r. So A mu v minus mu r. Then, so ऐसा कुछ कर सकते हो, डेल्टा v minus डेल्टा, सिंपल. ठीक है, सो दिस इज दिस मच. एक होता है तुम्हारा डिस्पर्सिव पावर. अगेन दिस आर वेरी कॉमन एंड स्मॉल टर्म्स. डिस्पर्सिव पावर अगर आपसे पूछता है तो बेसिकली ये पूछ रहा है एंगल ऑफ डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय द deviation of yellow light, which is basically the, you can say, the light with एवरेज वेवलेंथ. यू कैन चेक, जैसे ये जो येलो लाइट है उसको हम ऑलमोस्ट इन सारे वेवलेंथ्स के एवरेज वैल्यू के बराबर मानते हैं ऑलमोस्ट. सो बेसिकली डिस्पर्सिव पावर इज व्हाट? डिस्पर्सिव पावर इज एंगल ऑफ डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय डिविएशन ऑफ दिस येलो लाइट. ठीक है, मीन रे, येलो का जो वेवलेंथ है दैट इज मीन ऑफ ऑल दोस वेवलेंथ्स. सो या यू कैन राइट इट लाइक दिस. उसके बाद आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, यू कैन गेट इट इन दिस फॉर्म और यू सिंपली राइट इट इन दिस फॉर्म. ठीक है, अगर येलो लाइट का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं गिवन है, इन दैट केस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो लाइट आप क्या लोगे? वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस रेड लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2. सो मीन ऑफ दिस टू रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस. ओके, so that you can use.
नाउ वी विल बी डीलिंग विद सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप देखो क्या है, आई मीन सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, जब आपका कन्वेक्स लेंस के लिए जब आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखते हो तब जो मुझे मिलता है इमेज मिलता है वो इनलार्ज्ड मिलता है। तो बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप में यही होता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है, वी गेट इनलार्ज्ड इमेज। सो सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट a simple convex lens. Okay, so we get enlarged image like this. अब देखो यहाँ पे माइक्रोस्कोप में जो इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है या पढ़ना है वो है तुम्हारा एंगुलर मैग्निफिकेशन। सो एंगुलर मैग्निफिकेशन पढ़ने के लिए हमें पहले दो टर्म को जानना होगा। आई मीन सिंगल टर्म, दिस इज नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब क्या है? नियर पॉइंट वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होता है इन फ्रंट ऑफ द आई दैट अ पर्सन इज केपेबल ऑफ फोकसिंग लाइट ऑन द रेटिना। जैसे आप बुक पढ़ रहे हो, बुक को आप अपने आंखों से एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखोगे, अगर आप बहुत पास लेकर आते हो यू वोंट बी एबल टू रीड द वर्ड्स रिटन ऑन द पेजेस, राइट? वो ब्लर हो जाए, काफी हेजी हो जाता है, यू वोंट बी एबल टू सी इट। सो एक नियर पॉइंट एक डिफाइंड है हमारे आई के लिए, जहां पे अगर आप रखते हो यू कैन सी द ऑब्जेक्ट, अगर उससे क्लोज लाते हो यू वोंट बी एबल टू सी, उससे दूर लेकर जाते हो तो देख सकते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है बुक को बहुत दूर लेकर गए तो देख सकते हो, लेकिन बहुत दूर अगर माउंटेन है तो आप उसको देख सकते हो, है ना? सो या near point for normal person is about 25 centimeter, making it hard to focus on object closer to your eyes than that. Now we will define angular magnification. So angular magnification है क्या? The ratio of angle subtended at the eye by the image formed by an optical instrument, जैसे telescope ले लो, माइक्रोस्कोप ले लो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ले लो। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या सिंपल माइक्रोस्कोप जो इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट का और जिसको हम फाइनली देख रहे हैं, वो हमारे आई पे कितना एंगल बना रहा है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट। एंड so that we will be writing on the numerator and then divided by what? Divided by angle subtended at the eye by the object when not viewed through the instrument. So when we are viewing it through naked eye, then how much angle it is forming at our eye position. ठीक है, so that we will be writing in the bottom. सो आई विल क्लैरिफाई इट। सपोज कर लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है हाइट एच का और हमने इसे नेकेड आई के सामने रखा है। ठीक है, सो कुछ ऐसा है। नाउ वी विल सी हाउ मच एंगल इट इज फॉर्मिंग। सो अल्फा एंगल बना रहा है एंड कितने डिस्टेंस पे हम रख सकते हैं? मिनिमम वी कैन कीप इट एट अ डिस्टेंस डी। और डी पर ही रख के हम क्यों चेक कर रहे हैं? तो देखो एक चीज है, जब हम जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, इसको तुमने डी डिस्टेंस पे रखा तो तुम्हारे आई पे कितना एंगल बना रहा है? इतना एंगल बना रहा है। ठीक है, और दूर लेकर अगर जाओगे, सपोज कर लो यहाँ कर दिया मैंने, ठीक है, सो अगर यहाँ करोगे तो एंगल कितना बन रहा है? ये एंगल और छोटा हो गया। और दूर करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये एंगल और छोटा होता जाएगा। सो तुम्हारे आई पे वो ऑब्जेक्ट और छोटा 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 एंगल बनाता जाएगा जैसे जैसे उसको बहुत दूर ले जाओगे। तो अगर ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बढ़ रहा और एंगल घटता जा रहा है तो तुम्हें देखने में प्रॉब्लम होगी। आई मीन वो उतना क्लियरली नहीं समझ में आएगा वो ऑब्जेक्ट क्या है, कैसा है। जैसे बुक के लाइंस को तुम बहुत दूर रख दो, यू वोंट बी एबल टू रीड इट, डन है। सो आई मीन डी पे ही रखना, मैक्सिमम हम डी पे रख सकते हैं क्योंकि डी से अगर क्लोज लाते हैं तो एंगल तो ज्यादा बनाएगा, एंगल तो ज्यादा बनाएगा, लेकिन इन दिस केस आवर आई वोंट बी एबल टू फोकस ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना क्योंकि नियर पॉइंट हमारा डी है, डन है। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। सो मैक्सिमम वी कैन कीप इट एट व्हाट? डी, इसलिए मैंने डी को लिया है। एंड यहाँ पे अगर मैं एंगल की बात करूं तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे tan अल्फा इज इक्वल टू एच बाई डी। ठीक है, सो दिस अल्फा इज स्मॉलर, अल्फा को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? एच बाई डी। सो दिस इज द एंगल फॉर्म्ड at the eye by the object when we are viewing it through naked eye. चलो अब इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू। सो दिस इज द सिंपल माइक्रोस्कोप। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था, अब ये ऑब्जेक्ट का इमेज बना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, इसका इमेज कहीं यहाँ बन रहा है। सो व्हाट आई मीन कैसे, कितना एंगल बना रहा है ये हमारे आई पे? दिस एंगल इज गेटिंग फॉर्म्ड, राइट? दिस एंगल, एंड दिस एंगल कैन बी रिटन एज व्हाट? जैसे देखो आई के थ्रू देखोगे तो तुमने तुमने इसको नहीं देखना है, ये तो डी डिस्टेंस से क्लोज रखा हुआ है आई के पास, तो इसे तो हमें नहीं देखना। वी आर सीइंग थ्रू द सिंपल माइक्रोस्कोप। हमें हमें क्या दिखाई देगा? सिंपल माइक्रोस्कोप इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना रहा है वो दिखाई देगा। सो वो इमेज तुम्हारा यहाँ बन रहा है एंड अगेन दिस इमेज शुड फॉर्म एट least distance of distinct vision, that is D,
डी पे बनना चाहिए, या फिर आई मीन काफी दूर भी बने तो दिख सकता है क्योंकि दिस इज इनलार्ज्ड वन। ओके, सो आइदर डी पे बनेगा, या फिर हम दो केसेस पढ़ते हैं। एक तुम्हारा जब इमेज सिंपल माइक्रोस्कोप कहाँ बना रहा है, डी डिस्टेंस पे या फिर ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे, यानी कि काफी दूर। डन है। सो यहाँ पे अगर आप एंगल की बात करो तो टैन बीटा आप लिखोगे। और टैन बीटा क्या है, टैन बीटा को दो तरह से लिख सकते हैं। आइदर हम लिख सकते हैं एच बाई यू, दिस हाइट बाई दिस, और यू कैन राइट इट लाइक एच डैश बाई हाउ मच, एच डैश बाई वी। ठीक है, सो एच बाई यू लिखो या एच डैश बाई वी लिखो, you can calculate what tan beta. Done it. So we will be going with which one, we will be going with this one. Why this one? क्योंकि देखो हमारे पास जो अल्फा है ना, जो हमने अल्फा लिखा है, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होगा, मैग्निफिकेशन बीटा बाई अल्फा होगा। अल्फा में जो हमने टर्म लिया है एच का टर्म है, एंड एच बाई डी लिया है। डन है, एच का टर्म है, और यहाँ भी अगर हम एच का टर्म ले तो वो कैंसिल हो जाएगा। सो बीटा अगर मैं लिखूं एच बाई यू, अल्फा लिखूं एच बाई डी, so this will become how much, d by u. This will be the angular magnification. Now this u can be what, I mean बहुत दूर अगर इमेज बनता है तो u will be equal to f, magnification will become d by f. एंड अगर इमेज तुम्हारा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है, उसके लिए u क्या होगा, दैट यू कैन कैलकुलेट. So when image is at infinity, in that case angular magnification you will be writing as d by f. ठीक है, एंड ये ऐसा केस होता है जब तुम्हारा आई काफी रिलैक्स्ड होता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। यहाँ पे आई पे कोई स्ट्रेस नहीं होता है। जैसे आप साइट सीइंग पे जाते हो, जब आप दूर की ऑब्जेक्ट्स को देखते हो तो वहां पे कोई स्ट्रेस नहीं आता, हमारी आई थकती नहीं। देन वी डोंट गेट टायर्ड, वी फील बेटर। लेकिन अगर आप रूम में बैठकर एक किताब पढ़ रहे हो फॉर 2 आवर्स, यू विल फील लाइक योर आई इज स्ट्रेस्ड, है ना, क्योंकि आपने काफी क्लोज में चीजों को देखा है और पढ़ा है। लेकिन साइट सीइंग में हम दूर की चीजें देखते हैं, अच्छी भी दिखती है, तो डबल एडवांटेज है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड रिलैक्स्ड व्यू। ठीक है, सो व्हेन योर आई इज फोकस्ड एट इंफिनिटी। नाउ व्हेन इमेज इज एट नियर पॉइंट, तो मैग्निफिकेशन तो हमारा डी बाई यू होगा। यू हमें निकालना है, तो सिंपल लेंस फॉर्मूला आप यूज कर लो। आप क्या लिखोगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, सो 1/v माइनस 1, आई मीन v तो हमें पता है, इमेज कहाँ बना है, डी डिस्टेंस पे, दिस साइड ओनली, सो माइनस टी minus u is equal to convex lens है, positive focal length, and 1/u will be equal to how much, minus 1/d minus 1/f. So this is equal to d plus f by fd, and with negative sign indicates that object is this side. Okay, so this is the real object, and magnification तुम्हारा क्या हो जाएगा, d by u. So u तुम्हारा कितना है, fd by d plus f. So यहाँ से डी डी कैंसिल होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, 1 + d/f. सो जब इंफिनिटी पे बनता है तो d/f, यहाँ पे एक ज्यादा हो रहा है, 1 + d/f. सो मैग्निफिकेशन इन दिस केस इज ग्रेटर। डन है, एंड हियर इट इज स्मॉलर, लेकिन फिर भी हम इस चीज को प्रेफर करेंगे। व्हाई वी विल प्रेफर इट, क्योंकि यहाँ पे हमारा आई स्ट्रेस में नहीं है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम क्लोज देख रहे हैं, है ना, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ऑब्जेक्ट को रख के देख रहे हैं, तो हमारे आई पे स्ट्रेस आएगा। सो यहाँ पे स्ट्रेस का फैक्टर है, मैग्निफिकेशन का एडवांटेज है, और यहाँ पे स्ट्रेस का फैक्टर नहीं है, मैग्निफिकेशन एक से कम है। बट स्टिल वी गो विद दिस वन, क्योंकि किसी को स्ट्रेस नहीं चाहिए, राइट? सो दैट इज द केस। नाउ सो इस केस में हमें मैग्निफिकेशन क्या मिला, वी गॉट इट एज 1 + d/f। ठीक है, बट यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन होता है ना, वो तुम्हारा सिंपल माइक्रोस्कोप से वो ऑलमोस्ट 9 के रेंज में मिलता है, इससे ज्यादा हमें नहीं मिल सकता। बट अगर हमारे पास देखने वाली चीज काफी छोटी हो, ठीक है, सो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको काफी ज्यादा मैग्नीफाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सी। सो वी यूज डबल लेंस इन ऑर्डर टू मैग्नीफाई, क्योंकि एक लेंस कुछ से मैग्नीफाई करेगा, सेकंड और भी करेगा, तो कंप्लीट मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, टोटल m1 इंटू m2। पढ़ा है ना हमने, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस वन, सो वी डिवाइस कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जहां पे हमारे पास दो होगा, एंड दो के हेल्प से वी विल बी एबल टू सी। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर कम लेते हैं और आईपीस का अपर्चर ज्यादा लेते हैं। अगेन कम लेने का रीजन क्या है, जैसे देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम काफी छोटी चीज को देख रहे हैं, और ये काफी छोटा है, इसके आगे अगर आप बहुत बड़ा लेंस रख दोगे ना, तो ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट छोटा है, इससे लाइट्स कम आ रहे हैं, और अगर ये अपर्चर काफी ज्यादा है तो लाइट काफी ज्यादा स्प्रेड हो जाएगा।
ऑलरेडी कम आ रहा है, स्प्रेड हो गया, जो इमेज बनेगा फर्स्ट लेंस से वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फेंट हो जाएगा, उतना स्ट्रांग नहीं दिखेगा। इसलिए हम इसका अपर्चर क्या बना रहे हैं, छोटा बनाते हैं। सो छोटा रखेंगे एंड दिस आईपीस हैज अ ग्रेटर दिस I mean this greater aperture than that with the objective lens. So यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या लिखोगे आप, मैग्निफिकेशन लिखोगे एम ऑब्जेक्टिव इंटू एम आईपीस। ठीक है, तो चलो हम जल्दी से चलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली हमें याद क्या रखना है, ये जो आईपीस है ना, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। सो सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने दो केसेस देखा, आइदर इमेज इन्फिनिटी पे या लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। सो यहाँ भी फाइनल इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप आइदर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाएगा या फिर इन्फिनिटी पे बनाएगा। ठीक है, सो एक केस में आईपीस का मैग्निफिकेशन हमें पता है डी बाई एफ होगा, सेकेंड केस में 1 + डी बाई एफ होगा। सो ये हमें ऑलरेडी पता है, एम ओ हमें फिगर आउट करना है। सो एम ओ को हम क्या लिखते हैं, so that we will be writing as, I mean simple, you can write magnification of lens formula if you remember. So that is v by u. So simply you can write v by u. अगर ये object distance u है, सपोज तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंड देन यू कैन कैलकुलेट कि फर्स्ट लेंस कहाँ इमेज बना रहा है, v अगर आप कैलकुलेट कर पा रहे हो तो सिंपली v by u लिख दो इनटू वट एवर केस इज गिवन। ओके, यू विल बी डूइंग इट। और अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है, सो सपोज कर लो इमेज तुम्हारा फाइनली इंफिनिटी पे बन रहा है एंड नथिंग इज गेटिंग टॉक्ड अबाउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, रादर वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ ऑफ ट्यूब लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देन हाउ वी विल गो अराउंड इट। तो देखो फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है, इंफिनिटी पे बन रहा है, तो हमें ई पता है, ई कितना है तुम्हारा, डी बाई एफ ई। ओके, सो दिस इज दिस वन, इसका वैल्यू कितना होगा, एम ओ क्या लिखोगे, दैट यू विल बी राइटिंग वी बाई यू, वी बाई यू, या फिर इसको क्या लिख सकते हो, एच डैश बाई एच। एच इज व्हाट, दिस वन, एच डैश इज व्हाट, एच डैश मैं इसको बुला रही हूँ। ठीक है, सो एच डैश बाई एच। अब देखो ये एंगल सपोज कर लो, ये एंगल बीटा है, ये एंगल बीटा है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो बीटा। डन है। सो यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल से मैं टैन बीटा लिख रही हूँ। सो टैन बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, दिस लेंथ। ये लेंथ तुम्हारा क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं कह रही हूँ कि फाइनल इमेज जो है वो इंफिनिटी पे बन रहा है, तो सेकेंड इमेज आईपीस के फोकस पे बना होगा, राइट। सो ये वाला जो लेंथ है तुम्हारा, ये पॉइंट बेसिकली दिस इज एफ ई का पॉइंट है। डन है। एंड अगर ये ऐसा केस है तो this will be equal to how much, this will be basically distance between the focus of objective एंड फोकस ऑफ आईपीस। क्योंकि देखो यहाँ से हमने लिया है पैरेलल लाइट ऑब्जेक्ट से, पैरेलल लाइट कहाँ जाकर इंटरसेक्ट करता है, फोकस पे। सो दिस इज एफ नॉट एंड दिस इज एफ ई, सो दिस इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन एफ नॉट एंड एफ ई, एंड दिस इज कॉल्ड योर ट्यूब लेंथ फॉर द केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको हम एल नॉट बुलाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टैन बीटा को एल नॉट बाई एच डैश, और एच डैश बाई एल नॉट होगा ना। ठीक है, चलो सही से लिखो। सो एच डैश बाई एल नॉट इज दिस वन, टैन बीटा। ऑल्सो टैन बीटा को इस ट्राइंगल से आप लिख लो, ये ट्राइंगल से ये वाला हाइट कितना होगा, एच के बराबर, एंड दिस इज एफ नॉट, सो एच बाई एफ नॉट, इसको हम एच बाई एफ नॉट भी लिख सकते हैं। सो एच डैश बाई एच क्या है तुम्हारा, एल नॉट बाई एफ नॉट। सो यहाँ से टोटल मैग्निफिकेशन आप लिखोगे एल नॉट बाई एफ नॉट हियर इनटू डी बाई एफ ई। अगर तुम्हें ट्यूब लेंथ की बात हो रही है, यू कैन पुट इट लाइक दिस। ओके, मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, देखो इधर की तरफ ऑब्जेक्ट है, अपराइट है, फाइनली इमेज कहीं इधर बन रहा है, डाउन है। सो ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज का जो रिलेशन है, एक अपराइट है, दूसरा इन्वर्टेड है, नेगेटिव होगा। सो हमेशा टोटल मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, बिकॉज ऑफ इमेज गेटिंग फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इमेज जो बना रहे हैं वो इन्वर्टेड है, सो वहां से नेगेटिव साइन आ रहा है। देन सो दिस इज सॉर्टेड। नाउ वी विल सी द सेकेंड केस, आई मीन यहाँ पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट नियर पॉइंट। तो जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट नियर पॉइंट पे होगा, जनरल टर्म में मैंने ये लिखा माइनस साइन, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, वी नॉट बाई यू नॉट 1 + डी बाई एफ ई। डन है। सो नियर पॉइंट पे है तुम्हारा एम ई का वैल्यू ये होगा। ठीक है, एम नॉट इज दिस वन, एम नॉट को आप और क्या लिख सकते हो, अभी अभी हमने देखा एल नॉट, दैट इज ट्यूब लेंथ डिवाइडेड बाई हाउ मच, एफ नॉट, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, एंड एल नॉट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ फोकस ऑफ दिस टू लेंसेस।
ओके, सो ये ऐसा कुछ है। अब देखो टेलीस्कोप हम पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अगेन यहाँ भी दो लेंसेज होंगे, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि तुम काफी दूर के ऑब्जेक्ट देख रहे हो, यहाँ से लाइट आ रही है और काफी दूर से आ रही है, तो यू नीड की लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट शुड पास थ्रू द लेंस, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये लिमिटेशन नहीं है कि हमारे हमारे ऑब्जेक्ट से कम लाइट आ रही है, बहुत ज्यादा लाइट आ रही है। सो हमें बहुत ज्यादा को कैप्चर भी करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फॉर्म द ब्राइट इमेज, है ना। क्योंकि काफी दूर से लाइट आ रही है, अगर आपने अपर्चर छोटा लिया तो इसके काफी कम पोर्शन इससे पास कर पाएंगे। क्योंकि आप देखो लाइट, ऐसा ऐसा सोचो, ये सोर्स ऑफ लाइट है, इससे जब लाइट जाती है तो जो पॉइंट्स क्लोज हैं इस सोर्स से, वहां से तो काफी डेंस अमाउंट ऑफ लाइट पास कर रही है। लेकिन जैसे जैसे ये दूरी बढ़ता जाएगा ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। अगर आपने छोटा सा अपर्चर डाल दिया, कोई भी लाइट पास नहीं कर रहा। सो यू नीड अ बिगर अपर्चर इन ऑर्डर फॉर लाइट टू पास थ्रू इट। सो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इसका हम क्या लेते हैं, अपर्चर बड़ा लेते हैं, ठीक है। एंड देन दिस इज योर आईपीस, जिसके जहां पे आई को आप रखते हो एंड यू फाइनली ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट, ओके। सो यहाँ पे वी टॉक अबाउट एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंड एंगुलर मैग्निफिकेशन अगर आप देखो तो क्या होता है, एंगल फॉर्म्ड एट द आई बाय द, at the naked eye by the object, and then angle formed at the eye by the, I mean by the object when we are viewing it through the optical instrument. So optical instrument से जब आप इसको देख रहे हो तो आपका eye का position ये है. So angle getting formed is beta sort of. And अगर आप naked eye से object को देखोगे which is this side, तो आप eye को यहाँ रखोगे, right? इंस्ट्रूमेंट को थ्रू नहीं देखना है, नेकेड आई से देखना है. सो हियर, सो अल्फा, डन है. सो यहाँ पे अगर आप मैग्निफिकेशन देखो तो बीटा बाई अल्फा होगा. एंड इफ यू एक्चुअली कैलकुलेट इट, बहुत ही सिंपल सा है, बीटा बाई अल्फा करोगे तो यू विल बी गेटिंग एफ नॉट बाई एफ ई, ठीक है. सो देखो दिस इज द हाइट, राइट. सो दिस विल बी व्हाट, एफ नॉट. And final image is getting formed at infinity, that is the case we take. So this is your fe, done it. So tan alpha will be equal to how much, it will be h by f naught. Tan beta will be h by fe. So basically h by fe is tan beta and alpha is h by f naught. So magnification is this. यहाँ पे हम ट्यूब लेंथ लेते हैं, that is basically this whole length. So this is equal to f naught plus fe, that is the tube length of astronomical telescope, okay. सो दिस इज व्हाट वी विल बी गेटिंग, ठीक है. सो ये सारी चीजें हैं. नाउ ड्रॉबैक्स ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या क्या है. सबसे पहले तो ये काफी बल्की होता है, क्योंकि ये वाला अपर्चर साइज काफी बड़ा है, तो काफी हेवी हो जाता है, बहुत हेवी, सो मच दैट यू कैन नॉट कैरी इट, ओके. सो काफी बल्क है इसमें. एंड देन क्रोमेटिक एबरेशन, क्योंकि लाइट जो आ रही है सन से, सपोज कर लो किसी स्टार को हम देख रहे हैं या कोई हेवनली बॉडीज को ही देखते हैं, डन है. सो व्हाइट लाइट इज कमिंग, और व्हाइट लाइट के लिए तुम्हारा क्या होता है, फोकस डिफरेंट डिफरेंट होता है. क्योंकि हमें पता है फोकल लेंथ 1/f is directly proportional to mu, focus is directly proportional to 1/mu, and 1/mu is directly proportional to wavelength का स्क्वायर. सो तुम्हारा रेड लाइट का फोकस ज्यादा होगा, सो लाइट कन्वर्ज दूर करेगा रेड लाइट के लिए, और वायलेट लाइट के लिए पास करेगा, बहुत सारे फोकस मिलेंगे. सो इस सन का जो इमेज बनेगा वो तुम्हारे बहुत सारे बन जाएंगे. सो ब्लर्ड इमेज यू विल बी गेटिंग, डन है. सो वी नीड टू रिमूव क्रोमैटिक एबरेशन. और क्रोमैटिक एबरेशन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव को चेंज करना होगा. आईपीस से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर इमेज बनाता है तो आईपीस क्लियर बनाएगा. लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं बनाया तो आईपीस उस ब्लड का ब्लड ही इमेज बनाएगा, फर्दर ब्लर ब्लर हो जाएगा, राइट. सो बेसिकली यू हैव टू डील विद द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव को हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है. एंड देन स्फेरिकल एबरेशन. स्फेरिकल एबरेशन होता है, जैसे देखो क्रोमैटिक एबरेशन मैंने यहाँ पे दिखाया, डिफरेंट डिफरेंट फोकस होगा. सो दिस इज योर क्रोमैटिक एबरेशन. एंड स्फेरिकल एबरेशन, जैसे देखो यहाँ पे हम जब मिरर की बात करते हैं, या फिर आप स्फेरिकल स्ट्रक्चर लेंस की ही बात कर लो, एट एवरी पॉइंट वी आर टेकिंग पैरेलल लाइट्स फॉलिंग ऑन टू द सर्फेस, और हर पॉइंट पे क्या ये सिमिलर एंगल बनाएगा. बिकॉज ऑफ दिस कर्व्ड स्ट्रक्चर दिस एंगल विल बी डिफरेंट, right. And but we don't take that, we say that when the light is coming out they are getting deviated by the same angle, but that is not in real the case, because of curvature of the lens or mirror, done है. So different different points पे वो converge करेगा again because of the structure thing. So here also we will get different different focus, and image जो तुम्हारा बनता है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्लर्ड हो जाएगा. सो सबसे पहले तो देखो हमें क्रोमैटिक एबरेशन को हटाने के लिए लेंस को ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि टू द लॉन्ग देयर इज लेंस,
फोकल लेंथ विल डिपेंड ऑन द म्यू विच डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, तो हमारा काम नहीं बनेगा. सो वी नीड टू रिप्लेस ऑब्जेक्टिव लेंस विथ ऑब्जेक्टिव मिरर. बट मिरर में भी हमारे पास प्रॉब्लम है. ये हो सकता है, स्फेरिकल एबरेशन हो सकता है. उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हटाने के लिए बेसिकली वी कैन यूज पैराबोलिक मिरर. उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आई मीन दिस एबरेशन गेट्स रिमूव टू लार्ज एक्सटेंट. डन है. और ये सारे करेक्शन के साथ हमारे पास टेलीस्कोप है, कैसीग्रीन टेलीस्कोप. यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव की तरह बिहेव करता है ये मिरर, पैराबोलिक मिरर. ठीक है. एंड देन देर इज सेकेंडरी मिरर दैट वी यूज. देखो यहाँ पे हमने कन्वेक्स मिरर यूज किया है. दिस इज योर कन्वेक्स मिरर. सो बेसिकली यहाँ पे चीजें तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है. हमारे पास ऑब्जेक्टिव मिरर ये पैराबोलिक मिरर है. सो क्रोमेटिक एबरेशन हट गया, दैट इज स्फेरिकल एबरेशन भी हमने हटाया. आईपीस है ये वाला. और देखो आईपीस को हमने यहाँ रखा है, इससे हमारा स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट हो रहा है. कैसे, अगर मैं बताऊं यहाँ पे देखो कुछ ऐसा हो रहा है. जैसे नॉर्मल अगर होता ना तो क्या होता, जैसे सपोज कर लो ये लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे गई, यहाँ पे तुमने मिरर को नहीं रखा होता. सपोज दिस कन्वेक्स मिरर इज नॉट देयर. सो लाइट जो भी ऑब्जेक्टिव मिरर से रिफ्लेक्ट बैक हुआ है, दैट इज ऑब्जेक्टिव जो भी लाइट रिफ्लेक्ट कर दिया वो पास करेगा आईपीस के थ्रू. डन है. सो लेट्स से आईपीस इज समवेयर हियर. सो आईपीस को हमें क्या रखना पड़ेगा, आईपीस को दूर ही रखना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि आई मीन ये जो पैराबोलिक मिरर है इसके फोकस से लाइट पास करेगा, है ना. पैरेलल लाइट्स कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी विल आफ्टर रिफ्लेक्शन विल कट प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट कॉल फोकस. सो ये फोकस होगा, फोकस से फिर से लाइट इधर से जाएगा एंड देन इट विल अगेन कन्वर्ज एट द फोकस ऑफ दिस कन्वेक्स मिरर. क्योंकि अगर फाइनल इमेज हमें इंफिनिटी पे बनाना है तो कुछ ऐसा ही होगा. सो इस केस में हमें ऐसा दिख रहा है कि ये टेलीस्कोप का साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लाइट वापस से ऐसे जाएगा फिर इधर की तरफ जाएगा एंड देन समवेयर हियर विल बी योर आई इन ऑर्डर टू सी इट. डन है. बट यहाँ पे हमने क्या किया, लाइट को फोल्ड कर दिया. ऐसे लाइट गया, ठीक है, फिर से वापस से लाइट को इधर की तरफ भेज दिया. सो ये वाले स्पेस को डबल यूज कर रहे. एक तो इंसिडेंट लाइट के लिए यूज किया, रिफ्लेक्ट किया, वापस से उसे रिफ्लेक्ट कर रहे एंड वी आर सेंडिंग इट टू द आईपीस. सो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर हमारा कॉम्पैक्ट हो गया. स्ट्रक्चर इज नॉट दैट बिग, आई से लेमन टर्म में अगर मैं समझाऊं तो कैसीग्रीन टेलीस्कोप का स्ट्रक्चर भी कॉम्पैक्ट है. डन है. सो जो भी चीजें तुम्हें पता होना चाहिए वो मैंने बताया है. नाउ लेट अस मूव अहेड. सो कैसीग्रीन टेलीस्कोप रिजॉल्विंग पावर, देखो दैट इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस बट स्टिल हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का ही काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है. 2022-23 में क्वेश्चंस है, सो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है. देखो रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, जैसे आपने रोड पे काफी नॉर्मल एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप रोड पे खड़े होते हो, नाइट टाइम है लेट्स से, एंड यू आर सीइंग कि एक सिंगल लाइट आ रही है. लेकिन जब जैसे ही वो पास आता है तो हमें लगता है नहीं वो सिंगल लाइट नहीं था, एक्चुअली वो फोर व्हीलर है, टू लाइट्स है. तो जब वो काफी दूर होता है ना, वी आर नॉट एबल टू सी कि ये दो लाइट दो है, ये दो लाइट एक दिखता है. कहने का मतलब इन दो लाइट को हम दो नहीं देख पा रहे. इट मीन्स वी आर नॉट एबल टू रिजॉल्व इट. डन है. सो रिजॉल्व करने का मतलब जो जैसा है उसको वैसा देखना. जैसे कुछ पेंटिंग्स आपने देखे होंगे जो डॉट से बना होता है, लेकिन जब आप दूर रखते हो ना तो वो डॉट से बना हुआ नहीं दिखता, वो लगता है पेंसिल से ही बना हुआ है. बट जब आप उसको पास लाओगे तो डॉट्स दिखते हैं. तो दूर से आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे, पास आया तो आप रिजॉल्व कर पा रहे हो. अगेन दूर से क्यों नहीं रिजॉल्व कर पाते हो, सपोज कर लो आप रोड पे यहाँ खड़े हो, ठीक है. सो जब ये हेडलाइट दूर है ना तो इट इज फॉर्मिंग दिस एंगल एट योर आई. जब ये कार पास आ गई देन इट इज फॉर्मिंग दिस मच एंगल एट योर आई. सो एंगल ज्यादा बना रहा है, वी आर एबल टू सी इट, रिजॉल्व इट बेटर. ठीक है. सो कुछ ऐसा होता है. रिजॉल्विंग पावर हमारे नेकेड आई के लिए जो एंगल बनना चाहिए वो 1 आर्क मिनट है. डन है. बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी. सिंपल जितना तुम्हें जानना चाहिए उतना मैं बताऊंगी. सो ये टेलीस्कोप ले लो, सपोज कर लो हमारे पास दो स्टार है जिसको हम देख रहे हैं. इन दोनों को अगर हमें रिजॉल्व करना है तो ये जो है, क्योंकि देखो अगर ये ऑब्जेक्टिव रिजॉल्व नहीं कर पाता तो आईपीस नहीं कर पाएगा. जिस तरह से मैंने बताया अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर इमेज नहीं बनाता तो आईपीस नहीं बनाएगा. सो प्राइम टास्क इज कि ऑब्जेक्टिव हमारा इमेज को रिजॉल्व, सॉरी ऑब्जेक्ट्स को रिजॉल्व करे. उसके लिए यहाँ पे जो एंगल बनना चाहिए डेल्टा थीटा, दिस एंगल डेल्टा थीटा शुड बी 1.22 लैम्डा बाई डी, वेयर डी इज द डायमीटर. आई मीन दिस इज दिस डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके, ऑफ द टेलीस्कोप. सो दिस इज डेल्टा थीटा. अब देखो रिजॉल्विंग पावर इस टेलीस्कोप का ज्यादा कब होगा. ये रिजॉल्विंग पावर क्या है, आई मीन जब आप बहुत दूर हो तब भी
जैसे यहाँ पे हमारे आई का रिजॉल्विंग पावर ज्यादा कब होता, जब ये दूर होता तब भी हम उसको दो की तरह देख पाते, यानी कि इस स्मॉल एंगल के लिए भी हम देख पाते। सो स्मॉलर द एंगल हायर द रिजॉल्विंग पावर, स्मॉलर एंगल पे भी अगर हम रिजॉल्व कर पा रहे तब हम बोलेंगे हमारा रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। अगर मुझे उसको रिजॉल्व करने के लिए इतना एंगल बनाने की जरूरत पड़ी तो हमारा रिजॉल्विंग पावर कम है। सपोज कर लो दो पर्सन है ए एंड बी, ए इसको इतनी दूर पे रिजॉल्व कर पा रहा है और बी इसको यहाँ पे आने के बाद रिजॉल्व कर पा रहा है, यानी कि ए का रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है, यानी कि रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/थीटा, यू कैन से डन है। सो यहाँ पे भी डेल्टा थीटा एंगल जो बनना चाहिए वो ये होगा। और अगर रिजॉल्विंग पावर की बात करी है तो 1/डेल्टा थीटा लिखना, दैट इज d/1.22 लैम्डा। ओके, सो दिस इज दिस थिंग। अब देखो ये डेल्टा थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं क्वेश्चन में। सपोज कर लो ये डिस्टेंस हमें पता करना है, डी मिनिमम बिटवीन टू स्टार। तो डिस्टेंस ऑफ अ स्टार फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि हमारा टेलीस्कोप अर्थ पे है, ये डिस्टेंस आर ले लो तो ये भी आर मान सकते हैं। एंड वी कैन से दैट दिस इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, this is the angle formed by this arc, then you can use here r delta theta is equal to d minimum. So this is what we can use in here. Now if you talk about compound microscope, तो compound microscope में challenge ये है, जैसे हम छोटी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो दो छोटे ऑब्जेक्ट कितना क्लोज होंगे तब हम रिजॉल्व कर पाएंगे। डन है। सो दैट डी मिनिमम इज इक्वल टू बेसिकली 1.22 लैम्डा बाई 2 साइन बीटा। एंड व्हाट इज दिस साइन बीटा? बीटा क्या है तुम्हारा? बीटा इज बेसिकली, ये ऑब्जेक्ट प्लेन है, इसी प्लेन में ऑब्जेक्ट है। सो दिस एंगल यहाँ से ये, दिस इज बीटा, सो दिस इज साइन बीटा। इसको आप टैन बीटा भी लिख सकते हो बिकॉज दिस बीटा इज स्मॉलर, दिस इज दिस। कभी कभी हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका डी मिनिमम बढ़ाने के लिए, आई मीन कम कम करने के लिए, क्योंकि जब डी मिनिमम कम से कम है तो हमारा माइक्रोस्कोप अच्छा से अच्छा है, क्योंकि बहुत पास है तब भी हम उसको रिजॉल्व कर पा रहे, तो वो अच्छी चीज है, राइट। सो डी मिनिमम को कम से कम करने के लिए इसको हम ऐसे मीडिया में डुबोते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो। तो उस केस में लैम्डा तुम्हारा क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई म्यू। सो दिस विल बिकम 1.22 लैम्डा बाई 2 म्यू साइन बीटा। ठीक है। सो देखो डी मिनिमम क्या हो गया? और भी छोटा हो गया। सो रिजॉल्विंग पावर विच इज 1/डी मिनिमम इज ग्रेटर। डन है। सो टेलीस्कोप में मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर, देखो रिजॉल्विंग पावर तुम्हारा ज्यादा कब होगा? जब डी ज्यादा है, इसलिए भी हम इस अपर्चर को बढ़ा लेते हैं। ठीक, दिस इज वन मोर रीजन व्हाई वी टेक सो। चलो, सो वी हैव कवर्ड ऑल द कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन इसमें कम करना है, सो it won't be taking us much time. Consider the following statements for refraction of light through prism when angle of deviation is minimum. So first statement क्या है? Refracted ray inside prism becomes parallel to the base. Yes. Larger angle prism provide smaller angle of minimum deviation. देखो फर्स्ट लुक में तो ये करेक्ट दिख रहा है। जैसे डेविएशन को हम क्या देखते हैं? I plus E minus A. And you know that for minimum case I will be equal to E. So this is 2I minus A. ठीक है, कुछ ऐसा है। एंड यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? अगर ए लार्जर हो तो डेल्टा छोटा होगा, जो कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है। बट एक्चुअली जब आप ए को चेंज कर रहे हो ना तो आई भी चेंज होगा। जैसे देख लो यहाँ पे ऐसे आई है, ठीक है। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इफ यू इफ यू चेंज दिस एंगल, दिस आई विल चेंज, राइट। एंड ऐसे भी आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज करोगे इन ऑर्डर टू कैलकुलेट आई, because we know angle of refraction here r is a by 2 for the case of minimum deviation, right? So यहाँ पे अगर आप स्नेल्स लॉ यूज करते हो तो साइन आई तुम्हारा क्या होगा? दिस इज म्यू साइन a by 2. So I is also directly proportional to a. Done है? So if a is increasing, I is also increasing. Done है? So we cannot say that larger angle prisms provide a smaller angle of minimum deviation. We cannot say this. So this will be wrong. Angle of incidence and angle of emergence becomes equal. Yes. There are always two sets of angle of incidence for which deviation will be same. Yes, हमारा ग्राफ कैसा था? कुछ ऐसा था, right? So yeah, for two sets of angle of incidence, deviation value was what? It was same. Done it? So this also looks correct. And now angle of refraction becomes double of prism angle? No, angle of refraction become half of that when the case is of minimum deviation, right? So correct answer हमारा क्या है? A, C, D. So option 1. Now let us solve this question. A thin prism P1 of angle 4 degree and made from a glass of refractive index 1.54 is combined with another thin prism P2 made from a glass of refractive index this to produce dispersion without deviation. So deviation is not happening. Now deviation because of first prism will be equal to how much? Delta 1 आप लिख लो, that will be equal to thin prism है. So deviation का formula a mu minus 1 use करो, a
and this is mu minus 1, that will be equal to A is how much, 4 degree, and this is 1.54 minus 1. What will be the deviation by second prism? Delta 2 आप लिख लो, A mu minus 1, and that is equal to how much? A 1.72 minus 1. In the question it is said that there is no deviation happening. This person is there but no deviation. So delta 1 plus delta 2 is equal to 0. You will be taking it like this. And if you add it, how much you will be getting? This is 4 degree into 0.54 plus 0.72 into A equal to 0. So 4 degree into 0.54 is equal to 0.72 into A with negative sign. Done है? So यहाँ से ये cancel होगा, and this will become how much? इसको आप सॉल्व कर लो, 3 से 18 टाइम्स एंड दिस 4 से 18 टाइम्स. सो दिस इज 4 विल गेट कैंसिल्ड एंड A इज इक्वल टू हाउ मच, 3 डिग्री, माइनस 3 डिग्री. सो एक प्रिज्म को अगर आपने ऐसा रखा है तो दूसरे प्रिज्म को आप ऐसे रखोगे सच दैट देयर वोंट बी एनी डेविएशन. डन है? सो दिस वाज द केस. So correct answer will be which one? It will be your C. Now let us solve this question. A photograph of a landscape is captured by a drone camera at a height of 18 kilometers. So हमारे पास एक drone camera है जो कि ground को capture कर रहा होगा, and this is at a height of 18 kilometer. Now the size of camera film is this one. कैमरे की film का size क्या है? 2 centimeter into 2 centimeter. And the area of landscape photographed is this much. Okay, the focal length of lens in the drone camera is, how we can calculate focal length? सबसे पहले तो आप देखो, ये जो कैमरा का फिल्म है इस पे तुम्हारा क्या होगा? बेसिकली इमेज फिल्म है. डन है? और इमेज फिल्म कहने का मतलब इमेज की साइज आप ले लो. सो दिस इज 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर. एंड ऑब्जेक्ट का जो साइज है जिसको फिल्म किया जा रहा है, दैट इज ऑब्जेक्ट बेसिकली. सो दिस इज 20 किलोमीटर, दिस इज 20 किलोमीटर. So if we talk about this linear वाला magnification, then object size, image size की आप बात कर लो. So magnification की मैं बात कर रही हूँ. That will be how much? This will be equal to image का height, that is equal to how much? 2 centimeter. So 2 into 10 to the power minus 2 divided by object का height, that is 20 into 10 to the power 3. So this will become overall how much? 10 to the power 6. ठीक है? So magnification will be 10 to the power minus 6. Okay, not 6, 10 to the power minus 6. Okay, so this is the magnification. Now, how we can exploit this magnification in order to calculate focal length of the lens? तो देखो यहाँ पे एक चीज तो हमें क्लियर है कि ड्रोन कैमरा कितने हाइट पे है? 18 किलोमीटर. So we know that ground is getting filmed, whatever is on the ground is getting filmed. So object distance is how much? 18 kilometer. और हमें ये भी पता है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, such that we can say that object is at infinity. So image getting formed will be at focus, we can say, right? So magnification को आप क्या लिख सकते हो? V by U लिख सकते हो. So यहाँ से आप एक काम करो, V तुम्हारा क्या है? That is basically focal length. U तुम्हारा क्या है? That is 18 kilometer. So 18 into 10 to the power minus 3. And this is equal to how much? This is equal to magnification, which is equal to 10 to the power, how much? This is your 10 to the power minus 6. Okay. So this will be your, but it looks a bit absurd. ओके यहाँ मैंने 10 टू द पावर माइनस 3 लिखा है, दैट इज मिस्टेक एक्चुअली, बिकॉज दिस इज किलोमीटर, राइट? सो 18 into 10 to the power plus 3 and magnification was this much, right? So focal length is equal to how much? 18 into 10 to the power 3 into 10 to the power minus 6. So this is equal to 18 into 10 to the power minus 6 meter. So this will be near about how much? Sorry, minus 3, देखो मुझे दिख नहीं रहा, minus 3 meter. Okay, so this is, you can say that, 18 by 100 करोगे, then this will be, 1.8 centimeter, right? So this is equal to 1.8 centimeter. Okay, so correct answer should be what? It should be 1.8 centimeter. So we can deal with this question in this way. Okay, so correct option is your A. Now let us move to the another question. For a glass prism whose refractive index is this, the angle of minimum deviation is equal to angle of prism. Find the angle of prism. So angle of minimum deviation, so let's say that is delta, is equal to the angle of prism. So this is the information given and we have to calculate A. So delta को आप क्या लिखते हो? Delta को लिखते हो आप 2i minus A,
because this is a case of minimum deviation, I will be equal to E, so 2I minus E. And here delta is equal to A. So इसको आप A से equate कर दो. So 2I is equal to 2A. So I is equal to A. Done it? Now let us do one thing. Let us use Snell's law at one of its face. So let's say incident angle, we know that this is I, and angle of refraction here, it will be equal to, let's say this is R1, and we know that R1 and R2 in this case will be equal, and that will be equal to A by 2. Okay? So here if you use the Snell's law, what you will be doing, you will be writing, चलो लिखते हैं, so sin I, ठीक है, सो आई क्या है तुम्हारा ए के बराबर है, सो साइन ए विल बी इक्वल टू म्यू साइन आर, सो म्यू इज इक्वल टू √3, राइट, सो यहाँ पे √3 लिखो साइन ए बाई 2. सो दिस इज दिस मच. साइन ए को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन ए बाई 2 cos a by 2 is equal to √3 sin a by 2. So from here, this will get cancelled, and this will be √3 by 2. Cos a by 2 is how much? Cos a by 2 is equal to √3 by 2. So a by 2 is equal to 30 degree. So a will be equal to how much? 60 degree. So this is the basic thing. है ना? Question बहुत easy है. So answer will be your how much? 60 degree. Now let us deal with this one. Refractive index of a prism with apex angle A is this much. The angle of minimum deviation is. So, apex angle is given. That is angle of prism. That is A. And mu is equal to how much? Cot A by 2. And we have to calculate what? Angle of minimum deviation. So, how we calculate angle of minimum deviation? That is delta. And this is equal to uh, how much? I plus E minus A. So, we can say that 2I minus A. Right? And we need to calculate here I. चलो I को निकालते हैं. Done है. So let's say this is your I, and angle of refraction here will be equal to how much? A by 2. Case of minimum deviation, right? So if you use the Snell's law in here, you will be writing what? Sin I is equal to mu, that is your cot A by 2 into sin A by 2, that is sin R, right? So this is this one. Now this is cos A by 2 by sin A by 2. Sin A by 2 will get cancelled. So we are left with cos A by 2. Now sin है इधर cos है, इसको cos के टर्म में आप लिखो. So this will be cos 90 minus I. Okay. So this is equal to cos A by 2. So 90 minus I is how much? A by 2. So I is equal to how much? I is equal to 90 minus A by 2. Now let us put it here. I को आप क्या लिखोगे? 2I is your 90 minus A by 2 minus A. So if you write it 180 minus A, that is 180 minus 2A. So correct answer will be how much? 180 minus 2A, that is your fourth one. Okay, so this is your correct option. Question काफी easy है, इस portion से question बहुत easy है. Only thing is you need to know the basic of this portion. Okay. Now let us look at this one. In reflecting telescope, secondary mirror is used. Secondary mirror हमने क्यों use किया था? Primary mirror we were using to remove chromatic aberration and spherical aberration. Secondary mirror के use करने से हमारा device compact हुआ था, है ना? I explained it to you कि हमारे Cassegrain telescope का जो size है वो छोटा हुआ, क्योंकि light एक दूसरे पे fold हो रहा था. जैसे light was coming, falling onto the primary mirror and then getting reflected like this, falling onto the secondary mirror. Sorry, ऐसा था. Okay, this is convex mirror, right? So a mirror was like this and it was getting reflected back. यानी कि light fold हो रहा है इस region में, folded onto each other and then it is falling onto eyepiece. ठीक है, सो इस वजह से हमारा डिवाइस क्या हुआ है, कॉम्पैक्ट हुआ है. सो रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ मैकेनिकल सपोर्ट, नो. रिमूव स्फेरिकल एबरेशन, नो. मेक क्रोमैटिक एबरेशन जीरो, नो. मूव द आईपीस आउटसाइड द टेलीस्कोपिक ट्यूब. यस, दिस इज करेक्ट. टेलीस्कोपिक ट्यूब, ये वाला जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर से तुम्हारा आईपीस रिमूव हुआ था. आईपीस वाज इन दिस रीजन, राइट, समवेयर हियर, एंड देन हियर वाज द आई seeing the distant object. ठीक है, so fourth one will be your correct. This is correct option. Now let us move to this one. A microscope is focused on an object at the bottom of a bucket. So हमारे पास एक bucket है, इसके bottom पे तुम्हारा microscope focused है. If liquid with refractive index 5/3 is poured inside the bucket, so इस bucket को हमने liquid से fill कर दिया, जिसका refractive index क्या है, 5/3 है. Then microscope have to be raised by 30 centimeter to focus the object again. और अब हमें microscope को यहाँ पे 30 centimeter से up ले जाना पड़ा है in order to focus again
on the object. The height of the liquid in the bucket is. So what is the height of liquid in the bucket? Okay, so we will talk about this height. Okay, so what will be this height basically? Now, initially, अगर मैं बोलूं कि तुम्हारा, I mean, let's say microscope was here. ठीक है? So initially microscope was here and then it was getting focused onto the object. There was no liquid and it was getting focused onto this ऑब्जेक्ट. सो फोकस करने के लिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए? एच होना चाहिए. अब देखो लिक्विड को डालने से क्या होगा? लिक्विड को डालने से ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर की तरफ राइज करेगा, है ना? वी हैव डेल्ट विद दिस रियल एंड अपेरेंट डेप्थ थिंग. सो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अब कुछ ऐसा हो जाएगा. तो माइक्रोस्कोप इस पे अब फोकस नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका फोकसिंग डिस्टेंस एच था. डन है? लेट्स से दिस इज एच डैश. सो माइक्रोस्कोप को हम इतने डिस्टेंस से अप शिफ्ट करेंगे सो दैट h dash plus that distance by which microscope is getting shifted will become equal to the focusing distance of microscope, that is h. ठीक है? So मैंने ये बोला कि initially h डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था और तब वो फोकस में था. यानी कि फोकस करने के लिए डिस्टेंस क्या होना चाहिए? माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट का h. फाइनली भी वही होना चाहिए. सो फाइनली I mean that distance is how much? h dash plus 30. So I will say that h dash plus 30 is equal to h. डन है. सो एच डैश को आप क्या लिखोगे? दैट विल बी इक्वल टू एच बाई म्यू, राइट? एंड दिस इज प्लस 30 इज इक्वल टू एच. ओके, सो आई मीन दिस इज h is equal to how much? We don't know. h by this is mu is how much? 5 by 3. So this is 3h by 5 plus 30 is equal to h. 30 is equal to h minus 3h by 5. So this is your basically 2h by 5 is equal to 30. Okay, and this will become how much? 15. So h is equal to how much? 75 centimeter. Okay, so I mean the height of liquid in the bucket is how much? 75 centimeter. Okay, so this is how we could have done it. Answer will be 1. It is 1. Yeah, it is 1. Now let us focus on this question. A thin prism P1 with angle 6 degree and made of glass of refractive index 1.554 is combined with another prism P2 made from glass of refractive index this to produce dispersion without average deviation. So average deviation 0 है. इसका मतलब delta 1 plus delta 2 is 0. Done है? Again, you will be using the same thing that we have done before. You will be getting the answer. I don't need to solve it, right? Answer will be this one. Now let us deal with this one. A scientist is observing a bacteria through a compound microscope for better analysis to improve its resolving power. He should. Resolving power मैंने बताया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए डी मिनिमम कितना होना चाहिए? 1.22 लैम्डा बाई 2 साइन बीटा. एंड रिजॉल्विंग पावर इससे जस्ट ऑपोजिट होता है. सो 2 साइन बीटा डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा. अब देखो ये क्या कह रहा है? इंक्रीज द वेवलेंथ ऑफ लाइट. अगर आप वेवलेंथ ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हो देन व्हाट विल हैपन? वी हैव टू improve its resolving power. So if we increase it, resolving power will decrease. So we cannot do that. Increase the refractive index of medium between object and objective lens. चलो चेंज करके देखते हैं. अगर तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज किया तो initially if system was in vacuum then lambda is lambda naught. In any media it will become lambda naught by mu, right? This is what the relation we have got. Snell's law से भी ये relation हमें मिला था. So I don't need to go into the explanation. I have done it already in the refraction part. So this is this much. अब देखो ये lambda क्या हो जाएगा? Lambda naught by mu. So resolving power is actually getting increased. So increase the refractive index of medium. Yes. Decrease the focal length of eyepiece. Focal length of eyepiece को अगर आप डिक्रीज करते हो उससे कुछ भी असर नहीं होगा. बिकॉज ये जो बीटा था ना दैट वाज एंगल गेटिंग फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव थिंग. ठीक है? सो नो दिस वॉन्ट हैव एनी इफेक्ट. इसके लिए हमें कोई रिलेशन ही नहीं है. डिक्रीज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. अब देखो इसको अगर आप डिक्रीज करते हो इस डायमीटर को, यानी कि ये d/2 को आपने डिक्रीज किया. इफ यू आर गोइंग टू डिक्रीज इट, जैसे मैंने सपोज करो मैं अभी डिक्रीज करती हूँ, ये एंगल क्या हो जाएगा? छोटा. और अगर ये एंगल छोटा होता है तो साइन ऑफ स्मॉल एंगल इज स्मॉलर. सो रिजॉल्विंग पावर विल डिक्रीज. So decreasing the diameter of objective lens is going to decrease the resolving power. This won't be correct. Okay. So correct answer should be which one? It should be your B. Now let us see for this question.
इन नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, अब देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात मैंने नहीं की थी, आई मीन दिस इज जस्ट अ टर्म दैट यू नीड टू क्रैक. सो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब in either compound microscope or telescope when final image is getting formed at infinity, that is called normal adjustment. ठीक है. The distance between objective and eyepiece is this. The focal length of objective when its angular magnification of telescope is 2 will be. So telescope के लिए I mean we have only learned the normal adjustment और कुछ हमें नहीं पढ़ना. ठीक है. And magnification हमने देखा था कितना था f naught by fe. And this is equal to 2 in here. And also distance between objective and eyepiece, that is tube length of the telescope, और उसको मैंने क्या बोला था f naught plus fe. So this is equal to 30 centimeter. अब आप इसको easily solve कर सकते हो. f naught को क्या लिख सकते हो 2 fe, so this will become 3 fe is equal to 30. So fe is equal to how much 10 centimeter. So f naught will be equal to how much 20 centimeter. So putting the formula, getting the answer type question, यहाँ पे ये होगा option A. Now let us move with this one. A microscope was initially placed in air. It is then immersed in oil. Okay. For a light whose wavelength in air is lambda, calculate the change of microscope's resolving power due to oil and choose the correct option. So resolving power अभी अभी हमने देखा था क्या होगा 2 sin beta into mu divided by 1.22 lambda. In the case where refractive index of media is other than that of 1, this will be the resolving power. ठीक है. So आप ध्यान से देखो in vacuum, when this setup is in vacuum, resolving power is 2 sin beta divided by 1.22 lambda, and when you are immersing it in oil, mu का value 2 हो जाएगा, so resolving power 2 times हो जाएगा. अगर मैं बोलूं कि वैक्यूम में रिजॉल्विंग पावर आर नॉट है तो मीडिया में कितना हो जाएगा 2 आर नॉट. नाउ लेट अस लुक फॉर द ऑप्शन. रिजॉल्विंग पावर विल बी 1/4 in the oil. No. Resolving power will be twice in the oil than it was in the air. Yes. Resolving power will be 4 times in the oil. No. Resolving power will be half in the oil than it was in the air. No. So correct option is which one? It is B. ठीक है. Chalo, the refracting angle of prism is A and refractive index of material of prism is this, then angle of minimum deviation will be. Such one question we have already done. अब देखो यहाँ पे I mean angle of minimum deviation निकालना है. So that is I plus E minus A. So I and E are equal for the case of minimum deviation 2I minus A. And I को आप निकाल सकते हो. I हम कैसे निकालेंगे? By using Snell's law. आप Snell's law यहाँ पे use करो. So sin I is equal to mu sin A by 2. Because for the case of minimum deviation, R1 is equal to R2 and R1 plus R2 is equal to A. That we already know. This is general case. And this is the case for minimum deviation, right? So here, I mean, R will become what? A by 2. ठीक है. So mu का वैल्यू आप पुट करोगे. mu क्या है? Cot A by 2. So this is cos A by 2 divided by sin A by 2 and this is into. देखो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और सिंपल क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं. दिस डन है. दिस इज cos A by 2. So sin I is equal to how much? Cos A by 2. Now you change this one. So sin I को आप क्या लिख सकते हो? Cos 90 minus I is equal to cos A by 2. So this is 90 minus I is equal to A by 2. So A is equal or I is equal to how much? This is equal to 90 minus A by 2. So 290 minus A by 2 minus A. So this is equal to how much? 180 minus 2A, same as before we are getting, right? So correct answer will be A. Repeated question, right? करने की जरूरत नहीं थी. The aperture of objective is this, the resolving power of this telescope. If light of wavelength this is used to see the object. So delta theta मैंने बोला था telescope के लिए 1.22 lambda by d, where d is the diameter, and resolving power will be 1 by this. So d by 1.22 lambda. Simply put the value. So d तुम्हारा क्या है? Aperture of the objective. That is d basically. ठीक है? This is aperture d. So D का वैल्यू है 24.4. 24.4 into 10 to the power minus 2 मीटर में रख रही हूँ. 1.22 into wavelength, that is your 2440, right? And angstrom, that is 10 to the power, so 10 to the power minus 9 लिखती हूँ. ठीक है. So this is this one. यहाँ से आप 10 को इधर की तरफ ले जाओ, यहाँ से 100 को इधर की तरफ ले जाओ. So you will be left with 110, right? And this will get cancelled. And this is equal to how much? 10 to the power. I mean, this will become 10 to the power minus 1
and then this is minus 9, 9 minus 1, 10 to the power 8 divided by 122. ठीक है, so almost we will be getting in the range of 10 to the power 6. ठीक है, और you do one thing, 1000 लिख लो, 1000 by 122 into 10 to the power 5. Okay, so 100,000 by 122, this will be in the range of 8. So 8 into 10 to the power 5 something. So C should be the correct option. So let us check. Yes. Now let us move with this question. Expected graphical representation of variation of angle of deviation with the angle of incidence. So हमारे पास यहाँ पे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है. This will be your correct option. ठीक है. और याद रखना ये ज्यादा स्लोपी होता है, ये लेस स्लोपी होता है. Okay. Now let us look at this question. What is asked here? A prism of refractive index mu and angle of prism A is placed in the position of minimum angle of deviation. So यहाँ पे ये A है and refractive index mu hai, and it is placed in the position of minimum angle of deviation. If the minimum angle of deviation is also A, then in terms of refractive index A is. So A का value क्या होगा in terms of refractive index? Okay, so we can minimum delta is equal to क्या होता है? E plus I minus A, and here delta is given as A, and this is your 2I minus A. So 2I is equal to 2A. So I is equal to what? A. Now use the Snell's law at this point. You will be getting A in terms of mu, right? बहुत easy है. So यहाँ पे आप क्या लिखोगे? Sin A is equal to mu sin R, and this is case of minimum deviation, R will be A by 2. So this is this, and so this is 2 sin A by 2 cos A by 2 is equal to mu sin A by 2. अब देखो जो कट हो रहा है उसको कट कर दो. Cos A by 2 is equal to how much? Mu by 2. So A is equal to how much? It is 2 cos inverse mu by 2. So option 1 should be the correct one. Okay. Let us check with this one. Yeah, this is correct one. चलो आगे की तरफ बढ़ते. द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म इज मिनिमम व्हेन, आई मीन सब कुछ रेपिटेशन है. इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर सिमेट्रिक टू द प्रिज्म. यस, दोनों ही लाइट प्रिज्म के फेसेस से, पैरेलल फेसेस से क्या बना रहे हैं? इक्वल एंगल बना रहे हैं. सो वी कैन से दैट they are symmetric to the prism. Refracted ray inside the prism becomes parallel to its base. Yes, this is true. Angle of incidence is equal to that of angle of emergence. Yes. When angle of emergence is double the angle of incidence? No. So A, B, C are true. So option 1. Okay. Yes. Okay. Chalo. Now this one. Given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. First case, for a simple microscope, angular size of object equals the angular size of image. हाँ, ये करेक्ट है. जैसे देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ था, है ना, इसका ऐसे इमेज बना था, and then there was this, and I have extended these two, and image was somewhere here. So image कितना एंगल बना रहा है? देखो ये एंगल बना रहा है. ऑब्जेक्ट कितना बना रहा है? ये एंगल बना रहा है. So both are same, right? And I mean both are same here. So this is correct. And second reason क्या कह रहा है? Magnification is achieved as the small object can be kept much closer to the eye than 25 centimeter, and hence it subtends a large angle. This is true, right? I mean magnification क्यों achieve हो रहा है? Because we are able to see the object closer to the lens thing than we can keep it टू द नेकेड आई. नेकेड आई के पास हमें कितने डिस्टेंस पे रखना है? डी डिस्टेंस पे रखना है. और उस केस में एंगल ये बनता है. अब हम इतने डिस्टेंस पे रख पा रहे हैं लेंस के पास, एंगल बढ़ा है डेफिनेटली. ठीक है. एंड इसका मैग्निफाइड इमेज वी आर सीइंग थ्रू द आई. Okay, so magnification is achieved as the small object can be kept much closer to the eye than 25 centimeter, and hence it subtends a large angle. So this is true. Now the question is reason able to explain the assertion? So यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो if I mean you just need to pause here for 1 minute. I will suggest जैसे 1 मिनट के लिए आप pause करना वीडियो को, and then you try thinking on this one कि I mean reason is correct. I'm telling you can also see reason is correct. Assertion is also correct. Is reason the correct explanation of assertion? That you need to think for a second or minute. अगर आपने सोचा होगा तो आपको ये लग रहा होगा कि एक्चुअली रीजन इज व्हाई द असर्शन एग्जिस्ट, है ना. ये रीजन है इसलिए ये असर्शन एग्जिस्ट कर रहा है. मैग्निफिकेशन
अचीव करने के लिए वी आर मेकिंग सच अरेंजमेंट्स. ये जो अरेंजमेंट बना है, दिस अरेंजमेंट वी आर मेकिंग फॉर व्हाट? इन ऑर्डर टू अचीव द मैग्निफिकेशन, राइट? सो रीजन एग्जिस्ट like this. Done it? And because this is existing, we can say that for a simple microscope, angular size of object equals the angular size of image. So actually reason is taking us to the assertion. Done it? So we will say that statement A is true and R also true, and R is the correct explanation of it because R is taking us to the assertion. That is why we can say. So it is a bit confusing, but you can reach like दिस वे कि ये जो रीजन है इसी वजह से ये असर्शन भी एक्सप्लेन हो रहा है ना? जैसे मैंने बोला ना, ये एंगल formed by the object is equal to angle formed by the image. Why it is so? Because setup is like this, and setup is like this for what reason? In order to achieve magnification. Okay, so yeah, correct answer should be what? Both A and R are true, and R is the correct explanation. Third we should go with. Okay, yeah, so this will be the third one. The aperture diameter of telescope is given, that is 5 meter. Okay, and then what else is given? The distance between earth and moon is given. Using light of wavelength this, the minimum separation between two objects on the moon surface that can be just resolved is approximately. तो मैंने ये चीज तुम्हें कॉन्सेप्ट में बताया. If you have to resolve two things, जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? Distance between earth and the moon. So on the earth will be telescope. Let's say this is the plane of moon. Okay, so ये distance हमें given है. कितना है तुम्हारा? This is 4 into 10 to the power 5 kilometer. The minimum separation between two objects on the moon surface. So ये दो objects मैंने लिया है. इनके बीच का minimum separation क्या होना चाहिए? So that telescope can resolve it. So this angle should be delta theta, and delta theta is equal to how much? 1.22 lambda by d. Okay, और यहाँ से देखो, अगर ये r है और ये अगर d है, तो r delta theta, I have told you r delta theta, और arc length से आप निकाल सकते हो. r delta theta is the arc length which is d. Okay, so delta theta को आप क्या लिख सकते हो? d by r. So यहाँ पे काम करो, d by r लिखो, and then you write here 1.22 lambda by d. Now put all the values. So d we have to calculate. R क्या है? ये distance 4 into 10 to the power 5 kilometer. So 10 to the power 3. 1.22 lambda. Lambda is how much? 5500 angstrom. So this is into how much? 10 to the power minus 8 I will be writing, right? So this is this divided by d, that is 5 meter. So this is 5. Okay, अब आप यहाँ से solve कर दो. This will become 11, and this 11 into 4, that is 44 into 1.22. So एक काम करो, d is equal to how much? 44 into 1.22 into 10 to the power minus 8, no, 10 to the power 5 into 10 to the power 3. So this is 10 to the power 8, and यहाँ भी 10 to the power minus 8. So this will get cancelled basically. So we are getting this. Okay, और ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली किससे बराबर है? 20 मीटर से बड़ा है, 600 मीटर से छोटा है, 200 से भी छोटा है, 60 मीटर के अप्रोक्स होगा. सो करेक्ट आंसर वी शुड बी गोइंग विथ थर्ड वन. ठीक है. Now the magnifying power of a telescope with a tube length of this is 5. What is the focal length of eyepiece? Putting the formula, getting the answer type question. So tube length f naught plus fe is 60. ठीक है. And sorry, magnification is 5, that is f naught by fe. So f naught को आप क्या लिख सकते हो? 5 fe. 6 fe is equal to 60. So fe is equal to 10. And if f is 10, f naught will become how much? 50. हमें क्या निकालना है? Focal length of eyepiece. So 10. So fourth. Okay, we have got it. Now if magnification of 375 is required from a compound microscope with a tube length of this and objective of focal length this, then focal length of eyepiece should be. Again we need to put the formula, get the answer. So magnification आप क्या लिखते हो? I mean that is L by f naught into, I mean it's not given if you are talking about normal adjustment or what. So I mean दोनों में मैग्निफिकेशन का 1 का ही डिफरेंस होता है. कोई भी केस लेकर चलते हैं, आंसर हमें मिल जाएगा इफ इट इज नॉट गिवन देन. सो डी बाई एफ ई में लेकर चलती हूँ. ठीक है. सो मैग्निफिकेशन इज व्हाट? 375. एल इज हाउ मच? दैट इज 150 मिलीमीटर. सो इसको ब्रेक करने की जरूरत है क्या? एफ नॉट इज गिवन इन मिलीमीटर आई गेस. So yeah, 5 millimeter. So let us not break it. 150 by 5 into d.
These least distance of distinct vision, so 25 into 10 to the power minus 2 divided by Fe. So this will become how much? I mean, if you write it as 15 into 10, so 15 से ये 25 times में चला जाएगा, and this 25 will get cancelled, and this is your 2, right? So Fe is equal to how much? This is equal to 2 into 10 to the power minus 2, it seems like, right? So this looks like we are getting how much? 20. This is how much? 2 centimeter, right? So 2 centimeter we are getting as the answer because this is in meter, done it? So this is 2 centimeter, and 2 centimeter is close to how much millimeter? That is your 22 millimeters. So this will be your correct answer. Option first. Okay, so this one. Now let us move with the next question. The variation of refractive index of crown glass thin prism with the wavelength of incident light is shown. So wavelength is varying with the, I mean wavelength and refractive index का relation given है. So n and lambda का graph कुछ ऐसा दिया हुआ है. Which of the following graphs correctly represents the corresponding variation of angle of minimum deviation? सो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की अगर बात करो, चलो लेट्स टॉक अबाउट थिन प्रिज्म की बात हो रही है ना, यहाँ पे देखो हाईलाइट करो इसको. सो डेल्टा ऑफ थिन प्रिज्म वी राइट लाइक म्यू माइनस 1. सो ए डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, डन है. सो म्यू जिस तरह से बिहेव करेगा वेवलेंथ के साथ, डेल्टा भी वेवलेंथ के साथ सेम बिहेवियर रखेगा, डन है. सो म्यू डेल्टा के साथ कैसा बिहेवियर रखा है, ऐसा. सो डन है. सो डेल्टा भी म्यू के साथ सेम बिहेवियर रखना चाहिए, सॉरी डेल्टा भी वेवलेंथ के साथ सेम बिहेवियर रखना चाहिए, क्योंकि डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरिंग विथ वेवलेंथ लाइक दिस, सो डेल्टा शुड आल्सो वेरी विथ वेवलेंथ लाइक दिस बिकॉज दीज टू आर प्रोपोर्शनेट. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन आई वुड से वी शुड गो विथ द सेम ग्राफ, जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा ही यहाँ पे आपको मार्क करना है. सो दिस वन, यानी कि करेक्ट ऑप्शन शुड बी 2. या so we have got the answer, this one. Now let us move with this one. A ray of light incident at an angle of 60 degree on one face of prism with an apex angle 30. So यहाँ पे तुम्हारा apex angle क्या बोल रहे हैं, 30 degree. The ray emerging from the prism makes an angle of 30 degree with the incident ray. So the ray emerging from the prism. सो यहाँ से जो रे जा रहा है वो इंसिडेंट लाइट से कितना एंगल बनाया है, it is making an angle of 30 degree. So basically this is your delta deviation. So deviation is 30 degree. Angle of prism is 30 degree. Okay. So that emergent ray is perpendicular to the face from it emerges, and calculate the refractive index of prism material. So ये emergent ray perpendicular हो, इसके लिए क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल ये है, if emergent ray is perpendicular to this face, it means it is incident normally onto it. And for that, we will see that angle of emergence is 0. Angle of incidence, yani ki R2 is also 0. Done hai? So let us, let us put the things. कैसे निकाल सकते हैं, I plus E minus A is equal to delta. ठीक है, and here I is given or what? Yeah, incident at an angle of 60 degrees. So I is also given, that is your 60 degree. So this is 60 plus E minus this is A. A is how much? 30 degree, and this is your 30 degree. So 60 minus 30 is 30. 30 cancel हो जाएगा. E you are getting as 0. So yeah, it is perpendicular. Done है. Calculate the refractive index of the prism material. सो यहाँ से आप क्या यूज कर सकते हो, देखो हमें R2 0 है ये पता है, ठीक है, और R1 प्लस R2 क्या होता है, A. R2 0 है तो R1 किसके बराबर है, A, यानी कि दिस इज 30 डिग्री एंड I इज हाउ मच, 60 डिग्री. यूज स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस. सो साइन 60 इज इक्वल टू म्यू साइन 30. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू म्यू 1/2. सो दिस म्यू इज इक्वल टू नथिंग बट √3. Okay, so correct answer will be which one? It will be B. Now let us check. Yeah, it is B. Okay, now let us focus on this question. So a traveling microscope is used to determine the refractive index of a glass slab if the main scale has 40 division per centimeter and 50 vernier scale coincide with 49 main scale division, then the least count of traveling microscope is. सो सबसे पहले मैं तुम्हें ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का थोड़ा आइडिया दे दूं, ये होता क्या है. एक्चुअली दिस इज नॉट इन द
इंस्ट्रूमेंट सिलेबस ऑफ जेई एडवांस, बट ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से कुछ क्वेश्चन जेई मेंस में ही आए हैं। सो आई विल डिस्कस दैट। ये कुछ भी ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। जैसे देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हम एक पेपर लेते हैं, उस पे एक डॉट बनाया और इस डॉट पे माइक्रोस्कोप की हेल्प से फोकस करते हैं। सो सपोज कर लो माइक्रोस्कोप लेवल ये है, फोकस किया हमने लेंस को एडजस्ट करके, एंड देन वी मेजर दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप है उसमें तुम्हारा वर्नियर स्केल लगा हुआ है, वही हमें रीडिंग देता है। सो ऐसे किया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इसके ऊपर ग्लास स्लैब रख दिया। एक्चुअली ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का यूज ही होता है इन ऑर्डर टू डिटरमिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास स्लैब, ठीक है। सो हमने लिया स्लैब। अब ये स्लैब की वजह से अभी भी हमें डॉट पे फोकस करना है, लेकिन डॉट तुम्हारा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। So new focusing distance will be this one. Okay, so let's say this is this one. इसको आपने लिखा फर्स्ट रीडिंग R1, दिस इज सेकेंड रीडिंग R2। थर्ड रीडिंग हमें क्या लेना है, इसके ऊपर हम पाउडर स्प्रिंकल करते हैं, एंड देन वी ट्राई फोकसिंग ऑन दिस पाउडर्स, नॉट ऑन द डॉट। सो ये वाला डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, डन है। लेट्स से दिस इज R3। तो मुझे ये बताओ ये ग्लास स्लैब का विड्थ कितना होगा। सो अगर आप करते हो R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 करोगे तो तुम्हें ये वाला जो डॉट अपेरेंट था ना, ये वाला डिस्टेंस मिलेगा। एंड इफ यू डू R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, देन यू विल बी गेटिंग दिस डिस्टेंस। एंड इन दोनों को जब आप ऐड कर लोगे, यू विल बी गेटिंग द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, ठीक है। एंड इफ यू नो द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, यू कैन कैलकुलेट व्हाट, यू कैन कैलकुलेट म्यू। क्योंकि म्यू तुम्हारा क्या होगा, एच अपेरेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू दैट इज एच रियल डिवाइडेड बाई म्यू। सो एच रियल तुम्हारा क्या है, इन दोनों का समेशन। एच अपेरेंट क्या है, दैट इज योर दिस वन। ओके, सो देन यू कैन पुट एंड डू द थिंग्स, म्यू का कैलकुलेशन, डन है। सो ये है तुम्हारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। इसके इतने इंफॉर्मेशन के हेल्प से आप सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले इस पे चलते हैं। और ये क्वेश्चन तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का बस नाम मेंशन है, हमें वर्नियर कैलिपर आना चाहिए, वी विल बी एबल टू आंसर इट। नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। सो हमें क्या दिया हुआ है, मेन स्केल हैज 40 डिवीजन पर सेंटीमीटर। सो 40 डिवीजन हैज अ वैल्यू ऑफ 1 सेंटीमीटर। सो 1 मेन स्केल डिवीजन will have a value of how much, 1 centimeter by 40. So this much centimeter. Okay, and then 50 vernier scale coincide with 49 main scale. So 50 VSD is equal to 49 MSD. So we can see that 1 VSD is equal to 49 by 50 MSD. Okay, so this is this one. Then the list count of traveling microscope. So ये question traveling microscope का है भी नहीं, अगर वर्नियर कैलिपर आपको पता है, you will be able to answer it. सो लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। सो 1 MSD इज 1 MSD, 1 VSD इज 49 by 50। सो 1 MSD को आप कॉमन ले लो, यू विल बी गेटिंग 1 माइनस 49 by 50 into 1 MSD, that is equal to 1 by 40 centimeter. So this will be equal to how much, 1 by 50 into 1 by 40 into centimeter. Meter में we have to answer, so let us write here 10 to the power minus 2. So this will become how much, half into 10 to the power minus 5. So यहाँ से एक 10 लिख लो, यहाँ पे एक 10 लिख लो. So this is 5 into 10 to the power minus 6. So this will be your 5 basically. So correct answer should be what? It should be 5. Now to determine refractive index of glass slab using traveling microscope, minimum number of readings required. तो मैंने कितने रीडिंग लिए थे, देखो R1, R2, R3, 3 readings I have taken. So यहाँ पे क्या आंसर करोगे आप, 3, ठीक है। सो करेक्ट आंसर विल बी योर थर्ड वन। Let us now solve this question. So what is said in here, in an experiment to determine the refractive index of glass of a prism using an I delta plot. So we are basically plotting, let's say this is your delta and this is your I. So graph हमें पता भी है कुछ ऐसा. So we are plotting something like this. It was observed that a ray incident at this, deviation of this emerges with this. So one information is given, one set of data is given. So I is equal to how much, 35, and delta is equal to how much, 40, and then angle of emergence is equal to how much, 79. So from here we can calculate angle of prism, right? And this will be a constant thing क्योंकि आप इस experiment को करने के लिए एक prism उठाए होगे, डन है, जिसका एक constant angle होगा. So from here whatever A you will be getting will be a certain thing.
सो ए तुम्हारा क्या होगा, जैसे डेल्टा को क्या लिखते हो आप, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए. So if you put the value, delta is how much? This is 40, this is 35, this is 79 minus this is A. Okay. So clearly आप देखो, I mean this A will become 79 minus 40 minus 35. So that is 74. So this is 74 degree. Now we have to talk about the closest maximum possible value of refractive index. अब देखो refractive index को delta minimum के term में हम लिखते हैं, बहुत ही famously we write it like this. So mu is equal to sin I mean A plus delta minimum by 2 divided by sin A by 2. So A is 74, A by 2 is 37 and sin 37 is how much? 3 by 5. So this is 5 by 3 and this is sin A plus A by 2 plus delta m by 2. So that is sin 37 plus delta minimum by 2. सो मैथमेटिकली इफ वी चेक म्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, देखो अगर प्रिज्म के बेसिक फंक्शन को भूल जाए तो म्यू का मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 5/3 इंटू 1, बिकॉज साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ठीक है. सो म्यू मैक्स 5/3 कह सकते हैं. बट हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये हो सकता है कितना, 90 डिग्री. सो 90 डिग्री होने के लिए क्या जरूरी है, I mean this is 37. A by 2 is how much? 37. So delta m by 2 should be how much? 90 minus 37. That is your 53. So अगर तुम्हारा डेल्टा मिनिमम बाई 2 53 है, यानी कि डेल्टा मिनिमम क्या होना चाहिए? 53 इंटू 2. डन है. क्या ये हो सकता है? आप इंफॉर्मेशन में जाओ, यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू गिवन है 40 और यहाँ पे i इज नॉट इक्वल टू ई. डेफिनेटली यू कैन सी. सो डेल्टा इससे भी छोटा होगा. एक डेल्टा का वैल्यू हमें कुछ ऐसा मिला है, सर्टेन डेल्टा वैल्यू. सो डेल्टा मिनिमम डेफिनेटली उससे भी छोटा होगा, 40 से छोटा होगा. सो इट कैनॉट एवर बी इक्वल टू दिस वन. सो इसका 90 डिग्री वैल्यू तो हो नहीं सकता. डन है. सो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो डेल्टा मिनिमम का मैं यहाँ डेटा के अकॉर्डिंग पुट करूँ 40 ही पुट कर सकती हूँ, उससे छोटा ही होगा. डन है. सो मैक्सिमम चलो मैंने 40 पुट किया, 40/2. सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 20. 20 प्लस 37 57. सो ऑलमोस्ट 60 के बराबर. सो साइन 60. अब देखो म्यू इज इक्वल टू, हम मैक्सिमम वैल्यू में क्या लिखने वाली हूँ यहाँ पे, 5/3 into √3/2. So you solve it. I mean this is 5/6 into √3, 1.732. So this will become how much? This is 8.5 something divided by 6. So this is equal to 1. सही से मल्टीप्लाई करना, 1.4 समथिंग के करीब आएगा म्यू मैक्स. ठीक है. सो इफ यू डू दिस, क्लोजेस्ट मैक्सिमम वैल्यू हम क्या कह सकते हैं? सबसे छोटा तो 1.5 ही है, क्लोजेस्ट टू 1.4 और समथिंग. सो क्लोजेस्ट वैल्यू वी कैन, मैक्सिमम वैल्यू वी कैन टॉक अबाउट कैन बी 1.5. इससे बड़ा तो बिल्कुल ही नहीं लेना है. डन है. क्योंकि हमारा साइन का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे जो होगा वो 60 से कम ही होगा, 57 से भी कम होगा. सो जो √3/2 हमने लिया है वो भी एग्जैजरेशन है, वो भी ग्रेटर वैल्यू है. सो दिस थिंग इज एक्चुअली, आई मीन म्यू मैक्स से ये बड़ा है. सो बट डेटा के अकॉर्डिंग व्हाट वी कैन टेक इज 1.5. ओके. सो डन है. आई होप दिस इज क्लियर. लेट अस चेक विद द ऑप्शन. ऑप्शन में क्या दिया था? 1 ही है. ठीक है. चलो. सो दिस इज सॉर्टेड. Now let us solve this question. So what is said in here, monochromatic light is incident on a glass prism of apex angle A. If the refractive index of prism material is mu, the ray incident at an angle theta on face AB will be transmitted through face AC provided that. So question ये कह रहा है कि actually इस light को यहाँ से ऐसे incident हुआ after falling onto the second surface AC. It is actually getting transmitted. It means it is not getting internally reflected. It means what? This angle of incidence onto the second phase, let's say this is R2. So this R2 has to be what? This R2 has to be less than that of theta C. ठीक है. So ये R2 के लिए आपको रिलेशन बैठाना पड़ेगा. This is less than theta C and then we need to relate it with theta. Okay. How we can do that? So apex angle is given A, right? So if this is R1, let's say this is your what? This is your R1. And if this is R1, then R1 plus R2 का रिलेशन हमें पता है. R1 plus R2 is equal to A. डन है. सो R2 को आप क्या लिख सकते हो? R2 को आप लिख सकते हो A minus R1.
ठीक है. सो दिस इज R2. सो यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ A minus R1 is less than theta C. So if I go with this one, R1 A minus theta C is less than R1. So R1 is basically greater than A minus theta C. और R1 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप स्नेल्स लॉ यूज करो. सो यू विल बी राइटिंग साइन थीटा इज इक्वल टू mu R1, sin R1, right? So this is mu sin R1. So sin R1 can be written as sin theta by mu. Okay. So एक काम करो, यहाँ पे दोनों तरफ आप साइन ले लो. इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ साइन लेती हूँ. सो आई विल बी राइटिंग व्हाट, आई विल बी राइटिंग साइन R1 इज ग्रेटर देन साइन A माइनस थीटा C. सो दिस इज साइन A माइनस थीटा C. क्या होता है? क्रिटिकल एंगल 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बिकॉज रेयर मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है तुम्हारा? दैट इज इक्वल टू, आई मीन यहाँ पे साइन A माइनस, ओके ओके, लेट मी write that for you. So critical angle हम क्या लिखते हैं? If you remember sin theta C, we write like refractive index of rarer media by refractive index of tensor. So here error is 1, so this will become 1 by mu sin theta C. So theta C is what? Sin inverse 1 by mu. So this is your sin inverse 1 by mu. It is this one, okay? So this is this sin R1. R1 की जगह क्या, sin R1 की जगह क्या लिख सकते हो? Sin theta by mu. So greater than mu sin A minus sin inverse 1 by mu. So here theta is greater than what? It is greater than sin inverse, and this is mu sin A minus sin inverse 1 by mu. So let us check with the options. So this is sin inverse mu sin A minus sin inverse 1 by mu greater than, right? So option A feels correct. Option A. Let us check with the option. Okay, B. Theta is less than, I'm getting greater, right? So theta is greater, we are getting. Why? R2 should be less than theta C. Yeah, it should be less than theta C in order for it to emerge out. देखो यहाँ पे inequality में कुछ गलत तो नहीं किया हमने. A minus R1. ओके, R2 को हमने क्या लिखा? A minus R1. That is also correct, less than theta C. So A minus theta C is less than R1. So R1 is greater than A minus theta C. We have done the justice, है ना? I need to check with the answer, recheck. Okay, just give me 1 second. Yeah, actually what we have got is correct. Answer मैंने गलत लिखा है यहाँ पे. So this should not be B, this should be A. Okay, so that is correct. The graph showing the relation between angle of deviation and angle of incidence for triangular prism is represented by. तो आंख बंद करके आप इसको टिक करोगे, है ना? Because you already know this. Now this one, astronomical telescope has a large aperture. Large aperture एक तो इसलिए है so that bright image बन सके of the distant object, and then with the resolution it has to do to increase, to have increase resolution, right? To have high resolution. क्योंकि delta theta हम क्या लिखते हैं? 1.22 lambda by d. Resolution is what? 1 by delta theta. So this is basically 1 by delta theta is directly proportional to d. Okay, so yeah, to have high resolution. So this one is the correct. Okay. So this way we have covered all the questions that came uh, up from 2024, no 25 down to 2000. Okay, so I hope this session was helpful, and I hope you got cleared of telescope, microscope, and also prism thing. But if you have any doubt anywhere in any of these questions or concepts, you can always let me know in the comment section. Thank you. Take care of yourself. Bye bye.